today you have to start a new chapter, that is sequence and series. This real sequence is a function from natural number to real number is sequence. Domain टा होची natural number, range टा होची हाँ subset of हमें sequence केमिति लिखि पारे एने कोले एटा होची a1 a2 एटा होची terms of sequence. ଗୋଟେ एग्जांपल नबा -1 to the power n ताले -1 1 -n एटा कोन हो terms of sequence. r होची range of sequence माने से कहा भीतर अछि का -1 और 1 भीतर अछि एटा होची distinct terms of sequence. Next n is equal to 1 by n 1 1 by 2 1 by 3 चला छोटा बड़ की 1 so bounded above एटा होची bounded above और supreme होची 1 infimum होची केते 0 एटा टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होला जदि फाइनाइट वैल्यू आसीबो ताले सेटा कोन बाउंडेड बोली जानिया गोटे n by n ताको तो कॉमन लिमिट पका ऊपर n कॉमन ने तळ n कॉमन n कैंसिल 1 by n के दाबो 0 अब जे एटा के तला 1 अब 1 by 1 is equal to 1 finite asila, so this is a bounded function. n is equal to -1 to the power n ऐसे लिखा ला देखिए यार सुप्रीमम एपड़ को माइनस आड़ जाई पर माइनस इनफिनिटी आउ एपड़ भी इनफिनिटी, तो एटा इज इनफिनिटी, रेंज इज इनफाइनाइट, सो दिस इज व्हाट अनबाउंडेड फंक्शन. n 1 plus -1 to the power n by n 0 ऐसे आजला, this is neither increasing nor decreasing, बुझलो neither increasing nor decreasing function. तब नेक्स्ट हम आसिया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रेटली इंक्रीजिंग. मोनोटोनिक माने ता साथ समान भी हो पारे, बड़टा ता साथ समान हो पारे, কিন্তু स्ट्रेटली माने पूरा स्ट्रेटली समान होबनी. एडी जम देखि दे 1 1 2 2 एडी आसिला समान होला, কিন্তু एडी स्ट्रेटली पूरा 1 2 3 4 माने कोनोसी दुटा टर्म समान हबो नाही. सिमिलर डिक्रीजिंग करे. What is the limit point? Limit point. A number p is said to be a limit point of n sequence if every neighborhood of p contain infinite terms of n. माने एमिति जोटा फॉर्म टा लिमिट पॉइंट हबो जेमिति कि तार नेबरहुड उडा सेही सीक्वेंस रे बुझबल. ए नंबर p इज रिपीटेड इनफिनिटली टाइम, जोटा p टा रिपीट कला बारंबार तले ताकू भी हम कहबा गोटे कोन लिमिट पॉइंट बोली कहला. n इज इक्वल टू 1 by n तले लिमिट पॉइंट 0 हबो, तो इसका 0 रो आखबाको सब जिंस कोडी अछि या भीतर अछि. -1 टू पावर देखे -1 1 एटा रिपीट कोडा कोडा होछि, -1 और 1 रिपीट करछि, सो -1 और 1 टा कोन हबो लिमिट पॉइंट हबो. तबर बोल्जन वेरस्ट्रास थ्योरम, बोल्जन वेरस्ट्रास कोन कहछि ए थ्योरम टा कोन कहछि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस अछि लिमिट पॉइंट, सब बाउंडेड सीक्वेंस रे गोटे लिमिट पॉइंट रहइबो. अनबाउंडेड सीक्वेंस रे लिमिट पॉइंट रहि पारे न भी रहि पारे. लिमिट इज यूनिक, लिमिट होची यूनिक, जो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी कर छडा होची यूनिक, किंतु लिमिट पॉइंट टा एक बा ताठो अधिक हेई पारियो. लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस जोटा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n छडा होची लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस. तार असला बाउंडेड सीक्वेंस रे लिमिट यूनिक आसिले सेना ही लिमिट पॉइंट, एक रु अधिक आसिले लिमिट पॉइंट डज नॉट एक्जिस्ट. बाउंडेड सीक्वेंस देख 1 by n एरो लिमिट के आसिला 0 आसिला, एटा 1 and only 1 unique, so this is a limit point. If limit point of a sequence are more than 1, then sequence cannot have limit. जदि लिमिट पॉइंट अधिक रहला ताले हम जानिबा जे तार कोन सेटा गोटे लिमिट चल -1 टू पावर लिमिट पॉइंट के -1 1, सो तार लिमिट कोन नै जार लिमिट ता लिमिट पॉइंट यूनिक थियो जानिबा जे तार लिमिट ही अछि. तब नेक्स्ट अनबाउंडेड सीक्वेंस cannot have limit but having limit point. अनबाउंडेड सीक्वेंस लिमिट नहीं किंतु लिमिट पॉइंट थी जेम देख ए इज प्राइम एन इनफिनिटी अर फंक्शन बुझ अर लिमिट पॉइंट केते बुझले लिमिट पॉइंट हो 2 किंतु लिमिट अर लिमिट पॉइंट 2 को मेला 2 टा बारंबार रिपीट गला से तार लिमिट पॉइंट छडा बुझ. ए नॉन मोनोटोनिक सिस्टम कैन हैव लिमिट, जोरा नॉन मोनो सिस्टम तार भी लिमिट रही पारे बुझले. -1 टू द पावर n by n 1 by 2 -1 by 3 एटा लिमिट n टेंड्स टू 0. ए बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट हैव लिमिट, बाउंडेड सीक्वेंस रो लिमिट थाई पारे न थारे कंफर्म नै तो कहि दो बाउंडेड सीक्वेंस -1 टू द पावर 1 बुझो एटा लिमिट पॉइंट अछि -1 और 1 किंतु लिमिट नै बुझो 1 by n अछि. The limit of a sequence is also a limit point of a sequence, but converse is need not to be. Every sequence has may or may not, माने सब सीक्वेंस रही पारे न रही पारे, बाध्य नै जे लिमिट पॉइंट रहइबो.
convergence of sequence, convergence, a sequence an is said to be convergent if limit of sequences exist. যদি লিমিটটা এক্সিস্ট কলে সেটা কনভার্জেন্ট, যদি লিমিটটা কোণ হলা ইনফাইনাইট হলা বা যদি ফাইনাইট আসিলা কোণ হব সেটা কনভার্জেন্ট, যেটা ইনফাইনাইট আসিলা সেটা কোণ হব ডাইভার্জেন্ট। ফাইনাইট আসিলা 1 আসিলা তাহলে দিস ইজ কনভার্জেন্ট। এ সিকোয়েন্স অফ মোর দ্যান ওয়ান লিমিট পয়েন্ট সেটা ডাইভার্জেন্ট। এভরি কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স ইজ বাউন্ডেড বাট কনভার্জেন্ট ডট টু বি -1 to the power n, এটা হচ্ছে বাউন্ডেড কিন্তু এটা কোণ ডাইভার্জেন্ট। অনবাউন্ডেড সিকোয়েন্স নেভার কনভার্জেন্ট, যেমন n সেটা কুয়াড়ে যাব n টেন টু ইনফিনিটি সেটা ইনফিনিটি যাব না, সেদিন দ্যাট ইজ ডাইভার্জেন্ট সিকোয়েন্স। যদি ইউনিক লিমিট পয়েন্ট থাকবে তাহলে সেটা কোণ কয়া আমি কনভার্জেন্ট কয়া। আর এন ইকুয়াল টু 0 যেତେବେଳେ -1 to 1 ভিতরে ରହିଲା rটা, আর এন ইনফিনিটি -1 to 1 ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯୋଉଠି ରହିଲା ସେଟା କୋଣ ଇନଫିନିଟି। नेक्स्ट पेज अलजेब्रा और कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अलजेब्रा कौन कह देख लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n जदि l देला लिमिट n टेंड्स टू b जदि l देला ताले n प्लस bn कोन हो l प्लस हो सिमिलरली l माइनस n से करियो जदि 1/n देला ताले 1/l हो काई 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इज इक्वल टू p when n इज इक्वल टू p टू द पावर r 0 when 0 अदरवाइज बुझल प्राइम 1 2 3 4 ऐसे लिखले क्या को हम लिखे दे यदि प्राइम थिला ताले 0 लिख जो अदरवाइज 2 2 3 3 एटा 2 रो स्क्वायर 2 ताले सेला 2 रो क्यूब 2 3 n आज यूनिक लिमिट पर जेटा होची 0 जेटा खाली 0 ही गोटे मात्र टर्म जेटा रिपीट करछि सो दैट इज 0 इज द लिमिट पॉइंट। सम फाइनाइट हेले कन्वर्जेंट, सम जदि इनफाइनाइट आसला कोन डाइवर्जेंट। n tends to infinity bn is convergent, then n bn is either convergent or divergent। जेमति n square divergent bn 1/n कोन convergent ताले n bn टा कोन आसला convergent। सेमति n टा n is equal to कोन infinity होची इट इज कोन divergent ताले 1/n square टा कोन आला convergent किंतु मल्टीप्लिकेशन टा कोन होची convergent, इट कोन divergent ना convergent। may or may not have oscillate, oscillate भी कर पारंते। constant sequence is always divergent बोला। if xn is convergent and yn is bounded then limit n tends to infinity xn plus yn टा कोन हो सब बड़े oscillates करे जेम देखि दे xn 1/n तो ए जेला जे मिसे -1 to 1 एटा कोन oscillate। if yn is non monotonic sequence then limit n tends to infinity xn by yn is equal to limit n tends to infinity xn minus xn yn minus x। एटा कोन होबा बोले देखिए ओडा एग्जांपल लेके देखिए लेट याको से कोन कला c नेला कोन xn minus xn by n plus 1 minus n plus n कैंसिल आंसर तो c भाला जेतु फाइनाइट वैल्यू वाला सो दिस इज ए कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड देयर कन्वर्जेंस मोनोटोनिकली what is the increasing sequence bounded above convergent to its LUB lower upper bound। example देखिए 1/n 1/n lower upper bound कोड़ा इटा 1 so this is convergent to जो convergent to LUB 0 ये 0 तब decreasing bounded below convergent to GLB greatest lower bound कोड़ा 1। a necessary and sufficient condition for a monotonic sequence convergent if it is bounded हेल्ले जाएंगे सेटा convergent। तब आसिला division sequence does not have any limit point that is limit is equal to minus infinity by तर bounded above जदि आसिला कोन हो divergent to infinity, unbounded below आसिला divergent to minus infinity। n is and bn are two divergent sequence then n plus bn n minus bn n need not to be divergent but n bn माने multiplication टा must be divergent हो किंतु आउ सब हे पारे न भी हे पारे। n plus bn n bn are divergent then n and bn need not to be divergent। n is convergent and bn is divergent then n plus bn is always divergent। oscillate sequence कोन neither convergent nor divergent। चलो ये sequence of more than one limit यदि लिमिट टा गोटर अधिक रहला ए bounded sequence which does not converge is said to be oscillate finitely जेना -1 to the power n।
infinitely oscillator sequence माने कोड़ा -1 to the power n infinitely oscillator. Every oscillator sequence is non-monotonic but converse need not to be to देख to इति इटा not monotonic माने not oscillator. If 0 to a1 a2 and an plus 2 is equal to 1 by 2 a2, the limit n tends to infinity an is equal to 1 by 3 a1 plus 2 a2. Subsequence, a sequence convergent then subsequence also convergent in the 1 2 3 the subsequence 2n 2 4 6 এটা যদি কনভার্জ করছি তাহলে এটা भी obviously converge করিব n tends to l then every subsequence of n is also convergent to l মানে কনভার্স হবে না যদি subsequence l কনভার্জ তাহলে তার সিকোয়েন্সটা l সেটা বাধ্য হবে কিন্তু যদি বড় করছি তাহলে সামনে obviously করিবা বাধ্য কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স মানে কোন ডিফারেন্ট এটা আসলে কিন্তু এটা ডিফারেন্ট দেখে এটা খালি আসলে 1 1 1 এটা আসলে কমপ্লিমেন্টারি মানে ডিফারেন্ট সাবসিকোয়েন্স two complementary subsequence convergent to two different limits so n is not convergent subsequence convergent but n is not convergent if two complementary subsequence convergent to same limit then n is also to same every subsequence of divergent sequence is divergent but converse need not to be every subsequence of monotonic are monotonic a non-monotonic can have monotonic subsequence a bounded sequence have at least one convergent subsequence if two subsequences are convergent then sequence need not to be convergent every convergent sequence is bounded every subsequence of bounded is bounded but converse need not to be আসলে কৌচি sequence a sequence is কৌচি if it is convergent যদি সেটা কনভার্জেন্ট হলে তুমি তো কোন কয় সিকোয়েন্সটা কৌচি বাউন্ডেড সিকোয়েন্স there is a subsequence of an which is convergent every subsequence of n is convergent n is may or may not be converged next every sequence that has subsequence is may or may not be bounded দেখ টু সিকোয়েন্স সাবসিকোয়েন্স আছে কনভার্জেন্ট কিন্তু এটা তো আমার সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট নাই না diverse sequence has no convergent sequence every bounded sequence has a convergent subsequence bounded sequence যেମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ରହିବ ତ କାହିଁକି ନା ବାଉଣ୍ଡେଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ monotonic every sequence has a monotonic subsequence limit points of a sequence is need not to be limit of sequence every sequence has may or may not be limit point ଯେମିତି n not limit point ବୁଝାଯାଏ ନା limit interior ଆଉ ଆସିଲା limit superior ये लिमिट इंटीरियर में पड़ा ये क्या रहला n सुपीरियर माने ऊपर कर रहे हो बुझ केस 1 इफ लिमिट इंटीरियर इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट ताले सीक्वेंस हमको कन्वर्जेंट करे बड़ा एग्जांपल लिखि दी 1/n देखे तार इंटीरियर और सुपीरियर आउ लिमिट रा वैल्यू सब केते आसला 0 सो दिस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट हला ताले दी प्रकार आसियो आसला सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव और सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो देखि अनबाउंडेड एबव माने कोन तार ऊपरटा कोन आसीयो लिमिट सुपरटा कोन इन्फिनिटी आसीयो अनबाउंडेड बिलो माने कोन तार लिमिट इंटीरियर कोन आसीयो माइनस इन्फिनिटी बुझो एडा माइनस 1 आसला 1 आसला अछि कथा तापर आसला नेक्स्ट टर्म आसला केस 3 if sequence is oscillate जे oscillate गला if sequence is finitely oscillate then limit दे तार superior is equal to तार inferior we set up all limit -1 to the power n the range कोन से -1 to 1 with limit interior is equal to infinity infinity -1 limit superior is equal to 1 if sequence is infinitely oscillate the unbounded above मान तार कोन ऊपरटा infinity आसला बिलो मान कोन आसला infinity कोन माइनस infinity आसला unbounded above but bounded below एटा unbounded above माने कोन infinity bounded below माने कोन smallest limit point but bounded above एटा सेम जानि छ ना biggest limit point और एटा आसला infinity तार infinity तार किछ फार्मूला लगा है na हैला 3c2 आसला फार्मूला देखे 3 * 3 - 2 by 1 * 2 एटा सेम कोन करियो 5 एटी तीन थर करियो 5 5 - 4 5 - 3 ऊपर के तळ के तला 2 माने दीटा हला एटी 3 लखा जे तीनटा टर्म आसला आ 1 * 3 एटा फार्मूला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n plus k by n तर डिवाइड करी कोन 1 plus k by n to the power n एटा e to the power k सेमिति e to the power 1 केम तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus n by n सेन बजे डिवाइड करी कोन 1 plus 1 by n हां to the power n एडी ऊपर के जाय 1 तले हम लिख पारे e to the power 1 सिंपल तबर हम नेक्स्ट कांसेप्ट
sequence of real number. Some important theorem on limit. If limit n tends to infinity n is equal to L, then limit n tends to infinity n ର mod is equal to L. mod converse ଟା true ହେଇଗଲା. ତାର ଆସିଲା Cauchy's first theorem. ଏଟା very very important theorem. If limit n tends to infinity n is equal to L, then limit n tends to infinity a1 plus a2 plus an by n এই যে লাস্ট টার্ম is equal to L. বুঝিপারলো एग्जांपल লিখি দে এটি 1 by n ଅଛି এই 1 by n টা যাহাକୁ কনভার্জ করিব টোটালি টর্ম টা ହିଁ ତାକୁ কনভার্জ করিব বুঝিপারলো তো सेकेंड थ्योरम लिमिट एटा से पाखाविक सेम लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n प्लस l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू a जो मल्टीप्लिकेशन कर a n टू द पावर 1 by n जदि ए a n टा जोटी कन्वर्ज कला ताले ए जो टोटल टर्म रो मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 1 by n भी सेडी कन्वर्ज करिवो एग्जांपल लिखि दे 1 आसिला ए n टू द पावर 1 by n तो कन्वर्ज कर कोडी कन्वर्ट कर 1 कन्वर्ट कर ए टोटल टर्म टा का कन्वर्ट कर 1 को कन्वर्ट limit n tends to infinity n plus 1 by n is equal to L, then limit n tends to infinity n to the power 1 by n is equal to be obviously लिखि दे n ताले कोन आसला लिमिट n plus 1 n plus 1 n to the power n plus 1 by n करियो कटाकटी होला ठीक है बाहरिबा n plus 1 by n is equal to L दला L tends to limit n tends to infinity n is equal to 0 हबो देख होला तब n plus 1 by n कला लिमिट n tends to infinity n by n तब लिमिट n tends to infinity n plus 1 by n is equal to L where L रो mod टा कोन greater than 0 त लिमिट n tends to infinity n is equal to 0 series of real numbers summation of un आपको क्या series limit n tends to infinity un is equal to 0 summation of un is convergent sequence of partial sums of series sum of series हम क्या लिखियो limit n tends to infinity sn sn is equal to u1 s2 is equal to केते आसिला u2 तला sn is equal to कोन u1 plus u2 plus un the elements of the sequence sn partial sums of the series sequence sn टा कोन हो sequence of partial sum that is SOPS summation of un हम केमि लिख पारे 1 by n into n plus 1 by 1 into 2 1 by 2 into n तब s1 टा हम केमि लिख पारे 1 by 1 into 2 minus 1 by 2 तार सीक्वेंस टा तार केमि दिया 1 minus 1 by n plus 1 एटा तो सीक्वेंस टा बुझो बुझो 1 minus 1 by n plus 1 एटा सीक्वेंस summation of n is equal to n into n plus 1 by 2 n square का n into n plus 1 2 n plus 1 by 6 summation n की n into n plus 1 by square a series summation is convergent the SOPS टा convergent SOPS divergent SOPS टा oscillate geometry series बा हम geometry test हैला let a series 1 plus a plus a square plus a to the power n ताले केस 1 टा कोन हो जतले a रो mod टा less than 1 जते हम कहया convergent SOPS of series is Sn 1 plus a square plus a to the power n minus 1 Sn टा कोन असला 1 minus a to the power n by 1 by a ताले a रो mod टा कोन less than 1 आसे limit n tends to infinity Sn टा कोन 1 by 1 minus a sum of series is equal to finite so this is a convergent case 2 a रो mod टा greater than 1 ताले हम divergent का केमिति limit n tends to infinity n minus 1 by a minus 1 2 to the power n minus 1 2 minus 1 is equal to infinity so divergent case 3 a is equal to 1 summation of un is equal to क्या summation n to 1 infinity 1 to the power n minus 1 s1 टा कोन हला 1 s2 टा 1 plus 1 s3 के असला 3 so चलला त लिमिट n to infinity sn एटे टर्म टा केते अछि n अछि so n into n plus 1 by 2 like infinity so this is a divergent तार असला केस 4 a is equal to क्या असला minus 1 summation of un is equal to summation 1 s2 is equal to 0 s3 दिन चला SOPS oscillate so series is oscillate constant sequence is always convergent constant series is always divergent मन रखता तार नेक्स्ट असला telescopic series the series summation n is equal to 1 to infinity n minus n plus 1 summation n to infinity n plus 1 minus n are convergent if and only if the sequence n is convergent देखिए दा plus 1 a1 minus limit n tends to infinity by n is equal to limit n tends to infinity a n minus what a
किसी फॉर्मूला गुड़ा अच्छी देखिए कौन फॉर्मूला समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1 बाय n इंटू n प्लस 2 कौन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल बुझिगल ट्रिकटा n इंटू 1 प्लस 3 जान जीवो 1 बाय 3 इंटू 3 फैक्टोरियल बुझिगल सीरीज 1 बाय 2 स्क्वायर आउट जगह फॉर्म करी जीवो लास्ट रे कोन आसला m इंटू m माइनस 1 लिखियो m माइनस 1 कोन बुझिगल ना एडी केतरा तीनटा टर्म अछि 2 फैक्टोरियल तीनटा टर्म अछि 2 फैक्टोरियल समेशन ऑफ un समेशन 1 बाय n into n plus 1 ताको तो कौन करी पार्शियल फ्रैक्शन बुझ पाछन 1 बाय n minus 1 by n plus 1 पार्शियल फ्रैक्शन रा कोन बुझे डिफरेंस टा केता जो 2 by 2 into 1 by बुझ पालो नै ट्रिक एड से यहाँ जो डिफरेंस है 1 by 10 if limit n tends to infinity n and n tends to infinity n plus are convergent the limit n tends to infinity n plus 1 is equal to n तार असला partial fraction 1 by n into n plus 1 तो कितना हो a by n plus b n plus 1 समझे हेड हो जे a और b केमिति भालो a जोदरे 0 होची a कोथरे 0 होची n equal to 0 रे 0 होची एडी 0 पकेले एडी केते होला 1 वाला 1 पकेले n plus 1 टा कोथि 0 होची -1 0 होची -1 तो पकेले केते होला -1 बुझियो जे ना बुझी टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस में हमें टेस्ट करें फर्स्ट आसला पी टेस्ट फर्स्ट को टेस्ट आसला पी टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी जदी 1 बाय n टू द पावर p लिखिछु जदी p ग्रेटर देन 1 होला ताला कन्वर्जेंट आ जदी p ता लेस देन 1 होला ताले डाइवर्जेंट एग्जांपल लिखि दे 1 बाय n n टू द पावर केता अछि 1 जेटा इक्वल टू 1 सो दिस इज ए डाइवर्जेंट व्हाट सीरीज समेशन 1 बाय n इज डाइवर्जेंट नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un इज इक्वल टू 0 हेले सीरीज कन्वर्जेंट हेई पारे न भी हेई पारे बट एटा हबा को एट फर्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी हबा पड़िबो जोटा कि नेसेसरी कंडीशन देखि दो 1 बाय n स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर इक्वल टू 0 एटा कन्वर्जेंट हेई पारे न भी हेई पारे किंतु नेसेसरी कंडीशन को सैटिस्फाई करछ नॉट इक्वल टू 0 द समेशन इज डाइवर्जेंट माने जदी नॉट इक्वल टू 0 होला तो पूरा 100% कहि दो डाइवर्जेंट किंतु 0 हेले सेटा कन्वर्जेंट होबार चांसेस अछि हेई पारे न भी हेई पारे वन सो नॉट कन्वर्जेंट तो असला कंपैरिजन टेस्ट कोन un जदी लेस देन और इक्वल टू k vn हला तले फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m तले k इज फिक्स नंबर हला समेशन un इज कन्वर्जेंट समेशन vn माने अंक जन कर बिहेवियर सेम रहबो un और vn रा बुझियो ना बुझियो देखो 1 बाय n का तो v टाइप कोन 1 बाय n स्क्वायर ने 1 बाय n स्क्वायर तो बाय कंपैरिजन टेस्ट p एडा ह कोन कन्वर्जेंट सो दिस इज ए सोच ना बिहेवियर सेम रहबो देनो देखिए एसे जैसे समेशन n स्क्वायर log n तल तो vn कोन 1 बाय n स्क्वायर न एटा असला 1 बाय रूट n न सो तबरे note if summation n square and bn square converges series then a and bn is may or may not be convergent example like 1 by n and 1 by n square convergent 1 by n and 1 by n square convergent কিন্তু এখন যেভাবে মাল্টিপ্লাই করি সেটা भी কোন ডাইভারজেন্ট হবে দেখ n 1 by n square 1 by n 4 হলো convergent bn 1 by n square bn square কে 1 by n 4 এটা কোন হলো convergent মানে কিন্তু রুট ওভারটা কোন হবে ডাইভারজেন্ট এটা convergent তাহলে হলো লিমিট কম্পারিজন টেস্ট लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un by vn जदी l हला तले un और vn रा कोन बिहेवियर सेम रहइबो un तले vn के कला बोले 1 by n ए कांस्टेंट को काट दो कोन भारियो 1 into n क्यूब भारियो vn टा बुझो ना बुझो ना म्हणजे sin n अल्फा चले कोन हो vn टा कोन 1 by n अल्फा कोन vn टा कोन हो तले vn टा 1 by n स्क्वायर हो n tends to infinity un by vn is equal to so comparison test applicable तले vn टा 1 by n स्क्वायर कन्वर्जन सो un टा टोटल भी कोन हो कन्वर्जन sin x रो सीरीज टा देख x - x क्यूब by 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 by 5 फैक्टोरियल cos x 1 - x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल एटा सब फार्मूला तब tan k is equal to k plus k cube by 3 plus k 5 by 5 tan inverse x रे कोन हो x - x cube by 3 plus x 5 एटा हो माइनस खाली लिमिट कंपैरिजन रे vn एमिति काढियो जेमिति कि un by आ vn टा कोन हो un by vn ता जो डिवीजन टा कोन हो फाइनाइट वैल्यू तो जा फळ रे हम कंपैरिजन टेस्ट कोन करिया अप्लाई करी
तापर नेक्स्ट टेस्ट आसला डी आलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un प्लस 1 बाय un इक्वल टू l जदि हैला जदि l टा लेस देन 1 हैला कन्वर्जन l इक्वल टू 1 हैला टेस्ट फेल हबो l ग्रेटर देन 1 हैले कोन हबो डाइवर्जन तापर 2 फैक्टोरियल बाय 3 प्लस 3 फैक्टोरियल बाय 2 स्क्वायर एने आसला यार सीरीज टा होचे एटा बुझछ ना बुझल तले हम कोन करे un प्लस 1 बाय un करिया n प्लस 1 बाय un सो इनफिनिटी दोची सो दिस इज ए डाइवर्जन 1 बाय 2 टू पावर n दला करियो कोन 1 बाय 2 दला एटा कोन लेस देन 1 so this is a conversion तापर नेक्स्ट टेस्ट Cauchy's nth root test nth root test limit n tends to infinity un to the power 1 by n देज जदि कोन हला एटा l टा लेस देन 1 तला कन्वर्जन l टा ग्रेटर देन 1 डाइवर्जन l इक्वल टू 1 टेस्ट फेल un to the power 1 by n if n term of series in the power of n जदि n थिबो पावर टा n थिला तला 1 by n केला कोन पावर कैंसिल 1 by बुझबो ना बुझबो हला n रहला n स्क्वायर बाय जदि पावर तो n करू कोन हबो n रहला एडी केते रहला बुझिना बुझिना कटिला n रहला तले तले n कॉमन रहला 1 by e हला 1 by e माने लेस देन 1 दैट सो दिस इज ए जदि दीटा सीक्वेंस लिमिट समान थियो तले दीटा जाय कन्वर्जन हो जेमि देखि इनफिनिटी एडी तो 0 हला एडा भी 0 हला सो सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 minus 1 by 1 by not equal to 0 so this is necessary condition satisfy condition this is conversion होबो straightly होबो Cauchy's integral test Cauchy's integral test कोन कोजी सीरीज डिक्रीज थिले ही ए टेस्टटा ओके summation n is equal to 1 to infinity un is convergent if and only if 1 to infinity us is finite जदि तार इंटीग्रल टेस्ट में कोन तार इंटीग्रेशन ता कोन फाइनाइट वैल्यू summation n is equal to 1 to infinity 1 square is summation केतला 1 by x square dx is minus 1 by 1 to infinity c is equal to 1 केतला minus 1 दला जरा 0 जे not equal 1 वाला जला कि not equal जैसे necessary condition satisfy condition this is a conversion तारा सिला Cauchy condensation test if n is a decreasing sequence then the two series summation n and summation a to n to n converge or diverge together this test is useful for series of log n form थिले हमें टेस्ट पक्के n 2 to infinity log n by n तले n टा केते आसिला log n by n a to the power n to the power n जे कोन हो 2 to the power n log 2n by 12 log 2 to the power n जे कोन summation n to the infinity ए जो n टा ऊपर अछि ता आगु कोन n log 2 log 2 टा कांस्टेंट टा बाहर नै जे summation n is equal to infinity n जे log 2 into infinity so this is a divergent sequence if n is positive and monotonically increasing sequence the summation n is equal to 1 to infinity n is convergent if n tends to 0 भी होबो n into n tends to be 0 as n tends to infinity देखि दो एग्जांपल summation 1 by n देखना limit n tends to infinity 1 by n is equal to 0 n tends to 0 tends to infinity n is limit n tends to infinity 1 not equal to 0 n not equal to 0 so not convergent next time करिए alternating series summation n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 बुझियाल एटा यो नथले alternating series देखि यो माइनस अब प्लस माइनस अब प्लस एटा alternating series रूप n plus 1 1 by n 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus n plus minus यदि साइन टा अल्टरनेट हे चलला त हम कोई अल्टरनेटिव सीरीज है कोन सिंपल इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिव सीरीज फर्स्ट आसला लेibniz टेस्ट इफ un इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस फर्स्ट कंडीशन मन लई था माने जदी डिक्रीजिंग सीक्वेंस थियो ताले ही तो पके परियो लेibniz टेस्ट हाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un इक्वल टू 0 एटा तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नेसेसरी कंडीशन टा देन लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एटा हमर हो अल्टरनेटिंग सीरीज इज it is sufficient condition for convergent of alternate series example लिख दो log n not decreasing log n con decreasing sequence में so this is starting रही तो पूरा काट दो 1 by n log n 10 to infinity 1 by n log n so log एटा हो 1 by log n the decreasing sequence plus हमरा एटा equal to 0 दोची so this is a convergent तो असला absolutely convergent series if summation of mod un is convergent where summation of un is alternative series then summation
माने जदि तार mod un टा कन्वर्जेंट कला आ जो un टा सेटा अल्टरनेटिव सीरीज हैला ताले दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एग्जांपल n plus 1 by 1 by n summation mod n 1 by n divergence upon 1 by n square convergence so plus alternating so absolutely convergent conditionally kon un alternative series and summation un is convergent but not absolutely convergent conditionally dekhida 1 by n it is alternative series convergent where it is 1 by n it is divergent so this is a conditionally convergent तापर आसला तापर नेक्स्ट जो सीरीजटा कन्वर्जेंट ही नथिबो सेटा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की हबनी सो हम टेस्ट को करबा समेशन -1 to the power n n 1 plus n limit n tends to infinity even not equal to 0 so this is a not convergent तापर un is equal to -1 to the power n sin n alpha by n cube vn टा कते 1 by n cube पावर सीरीज कौन समेशन n is equal to 0 to infinity n जदि का x minus x n to the power n हला ताले n is equal to constant हला ताले एटा पावर सीरीज का that is summation n is equal to 0 to infinity n x minus x0 to the power n equal to a0 plus a1 x minus x0 plus a2 x minus पावर सीरीज रिजल्ट्स x is equal to 0 रे सब पावर सीरीज कन्वर्जेंट जदि x not equal to 0 रे पावर सीरीज टा कन्वर्जेंट होउनी ताले nowhere convergent if series is convergent for every value of x then series is everywhere convergent summation n is equal to 0 to infinity n to the power n and x to the power n nowhere convergent at x is equal to 0 un is equal to 0 convergent at x not equal to 0 x equal to 1 nale tale un kete lag n to the power n je un to the power 1 by n n equal to infinity so this is divergent n factorial x at x equal to 0 un 1 n factorial limit n tends to infinity un plus 1 by un n factorial 1 n factorial 1 by n plus 0 less than 1 so this is a convergent at x not equal to 0 x equal to 0 convergent so hence it is everywhere convergent माने everywhere और nowhere माने कोन x equal to 0 सब convergent x not equal to 0 रे जोटा convergent सेटा everywhere convergent जोटा x not equal to 0 रे जोटा divergent सेटा everywhere divergent थर्ड असला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरसी जो पर्टिकुलर एक्स रे वैल्यू पई सीरीजटा कन्वर्जेंट आ सबडे कोन हो डाइवर्जेंट से जगहटा होची कोन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस समेशन x by r to the power n limit n tends to infinity x by r to the power n to the power 1 by n कोन x by r दाले कोन हो कन्वर्जेंट पई कोन हो mod x लेस देन 1 हो ताले mod x कोन लेस देन r हला mod x ग्रेटर देन 1 ताले हम r टा कोन कहबे -r to +r तापर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट समेशन n to the power x n थिला एडा n टा कोन पावर सीरीज x लेस देन तला r आपका फार्मूला मन रखता 1 by r is equal to limit n tends to infinity n plus 1 by n रो mod limit n tends to infinity n to the power कितना थिला 1 by n समेशन n plus 1 by n plus 2 तला हम कोन रे un plus 1 by un पके करला पकेलु कटाड हे के देवाला 1 मारला 1 by r is equal to 1 तला r is equal to 1 some important results the RC of summation n to the power xn is summation n to the x minus n minus 1 RC of summation n to the x minus n is summation n by n plus 1 into x to the power n plus 1 if r is RC of summation n xn then RC of summation a x pn and pn plus k is r to the power 1 by p formula मन x 3n आधर r से लगे 2 by 3 3 हला यदि 3n plus 3 हला भी से 2 by 3 रा 3 r1 and r2 RC of summation n and xn then RC of ए जंगर जति सम ढाला ताकर मिनिमम r1 और r2 रा मिनिमम टा निया बो ଗୋଟେ एग्जांपल देखि दे 1 plus ए आसिला समेशन x to the power 2 to the power n हला बुझो ताले तुला काम करे फास्ट यार न बुझो ना 3n plus 1 3n plus 2 एती वाला इनफिनिटी r2 वाला एती कि ताले मिनिमम r1 मिनिमम √3 ताले √3 होची ताकर रेडियस बुझबो ना बुझो तब नेक्स्ट एग्जांपल 1 plus minus 1 to the power n 2 to the power n 1 plus minus 1 n minus 1 3 to the power r से x equal to 0 1 by 2 to the power n minus 1 to the power 1 कितना वाला
R1 2 वाला R2 वाला एतिक ताले मिनिमम ऑफ R1 R2 एसो जिति मिनिमम केते 2 सम ऑफ द सीरीज समेशन k is equal to 1 to infinity nk 1 by n summation k is equal to 1 to n f k by write the series in 1 by n put 1 by n is equal to dx and k by n is equal to x change the summation in integration with limit 0 to 1 summation k is equal to 1 to n 1 by n square plus k square root over प्लस के स्क्वायर जो के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो कितना एक्स स्क्वायर लिखिए बुझो ना बुझो एटी डीएक्स लिखिए तो e टू द माइनस 1 तार समेशन 1 by 0 फैक्टर माइनस 1 by 1 फैक्टर तब गोटे एग्जांपल देखिए समेशन a is 1 to infinity n by 2 to the power we know summation nx n is equal to x by 1 minus x square put x is equal to 1 by 2 पकेले ए फार्मूला मारे 2 by 3 के स्क्वायर बाय के एरा जो के फैक्टोरियल छुआ छ ना के माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय के माइनस 1 फैक्टोरियल करियो सम ऑफ सीरीज बाय एक्सपेंशन कोन e टू द पावर x रो सीरीज ता कोन 1 plus x square by 2 फैक्टोरियल plus x cube by 3 फैक्टोरियल e टू द पावर minus x कोन 1 minus x plus x square by 2 फैक्टोरियल minus x cube by 3 फैक्टोरियल log 1 plus x रो सीरीज ता मन log 1 plus x सीरीज ता कोन हो x minus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial x minus x square log 1 minus x कोन हो minus x minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x 4 by 4 sin x होची x minus x cube by 3 factorial plus x 5 by 5 factorial cos x होची 1 minus x square by 2 factorial x 4 by 4 factorial tan x होची x plus x cube by 3 minus 2x by 5 by 15 1 by 1 minus x रो सीरीज ता कोन 1 plus x square plus x cube plus x to the power n for x belongs to minus 1 to 1 छाड़ी आ होला 1 by 1 minus x square 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube differentiation x minus x plus 2x square plus 3x square multiplication